हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का नवनीत का जो वर्कबुक है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया की। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अंबाजी कहाँ पे आता है? वोटा फेयर, राइट। अंबाजी आता है भादरवी पूनम फेयर। गिरनार तो भवनाथ फेयर। धौलका वोटा फेयर। आवा डांग दरबार फेयर। सेकंड उसमें ही है निग्रोड्स, तो उसमें कौन आता है? इंडियाज एंशियंट मोस्ट इनहेबिटेंट। एस्ट्रोलॉइड्स उसमें आते हैं निषाद। द्रविड्स जो नेटिव इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, और मंगोलॉइड जिसमें आते हैं, राइट, उसमें कौन आते हैं? किरात। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। वन एक्सपीरियंस इज सच चित एंड गौरव फ्रॉम इंडियन कल्चर। फॉल्स। अ स्टेच्यू ऑफ द थ्री लायंस इज सीन इन आवर नेचुरल एम्बलम। फॉल्स. Of the 18 Jyotirlings, the Somnath temple of Gujarat is a place of pilgrimage. False. Total 12 Jyotirlings है. People of Negroes or the Negro caste were the very first inhabitant of ancient India. True. The Negroids were dark complexion, 5 to 6 feet tall, and a curly hair on their head. वो भी false. Next, the asteroid peoples were dark complexion with a long, broad head, short stature and a flat nose. तो true आएगा. उसके अलावा द्रविडियन पीपल were native of India. Also true. Next, write the short answers. Which of the one place in the world in Gujarat are the Asiatic lion are still found? The Girnar forest. How do the Indian sculpture architecture skill about 5,000 years old? Who are the ancient most inhabitant of India? The Negroids. Next, of which people are the following the main physical characteristics? Dark complexion, long and broad head, short stature and flat nose. तो स्टेरॉइड्स की बात होगी. नेक्स्ट बात करेंगे विच फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन द द्रविड्स. तो कौन आएगा? मैट्रिलियर्स. नेक्स्ट मैट्री आर्चर. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे. विच पीपल एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट चाइना थ्रू द तिबेट. मंगोलॉइड. नेक्स्ट by the which of other name were the Arya peoples? Arya people known? The Nordic Aryans. What name did the Arya people give the northwest India? तो आएगा सप्त सिंधु. Next questions. Where is the northern dance festival held? Modera. Which festival is celebrated in the Vadnagar? तो तानारीरी festival. Which Jain temple is in Bhavnagar? तो दालिताना. Next, which famous masjid in Ahmedabad? तो जामा मस्जिद. उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की. In the ancient books, does the book भारतवर्ष has been used for India? तो विष्णु पुराण. India hold the dash spot in the world according to its area. तो seventh. Next, we have give the respectful name of the dash to the river. Lokmata. On the inverted lotus of the Maurya age, there are the sculptures of the dash and a bull. तो lion. Next, fill in the blanks. Lothal that hold archaeological importance is located in the dash taluka. तो धौलका तालुका. Next, the dash of the Modera is the historically important place that the worth seeing. तो आएगा Sun Temple. इसके अलावा the Arya who came to India is called Astroloid people. Nisad. Since the Mongoloid peoples had yellow complexion,
they were is known as the Kirat. The contribution of the Dash community in the development of cultural and behavior of India is a special asteroid. Australoid आता है. The Dash community was the more advanced than its the contemporary, तो Aryans. Next इसमें आएगा choose the correct. The proof of Indians being environment lovers since ancient time is given by their तो love for trees. Which civilization does the image, तो किसकी इमेज है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन. Which article is the constitution has been specified that it is the duty of every citizen to preserve the culture of heritage of India, तो article 51A. Next, which of the following language does not belong to the Dravidian groups, तो हिंदी. फाइंड आउट करेक्ट पेयर, तो करेक्ट पेयर क्या आएगा, नॉर्थर्न डांस फेस्टिवल मोडेरा. सेक्शन बी, डिस्क्राइब द यूनिकनेस ऑफ इंडिया. अदर राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिया इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो उसका आंसर आएगा द एंशियंट स्कल्पचर विष्णु पुराण नेम्स इंडिया एज द भारतवर्ष. At the beginning of the any occupious ceremony, the words Bharat Muni, Bharatvarsh, Bharatkhand, Jambudvip, Aryavrat are used while taking the resolution. Next point, India is gifted with the natural boundaries which are Himalayan in the North Sea, in the east, west and south. Next, उसमें थर्ड पॉइंट, इन द टर्म्स ऑफ द एरिया इंडियाज रैंक द 7 इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें सेकंड टर्म आता है, इंडियाज रैंक्स इन द सेकंड इन द वर्ल्ड. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. व्हाट इज हेरिटेज, तो हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फॉरफेदर्स टू अस. वन जनरेशन passes to the same to the next generation. For example, son inherited the property as well as the goodwills left behind by his father. Next बात करेंगे how the foreign tribes that migrated to India in ancient times were Indianized. तो उसका आंसर आएगा इन ड्यू course of time various tribes migrated to India. These foreigners and the India tribes the amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identities and through intercaste marriages, and all these plays a vital role in the Indianizations of the foreign tribes. Next questions, which artwork of the ancient period make us proud of our culture heritage, तो उसका आंसर आएगा द फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस, द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा इन मेडिटेशन फ्रॉम द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा एट सारनाथ एट द टाइम ऑफ धर्मचक्र परिवर्तन ऑफ द मौर्यन एरा. इसके अलावा आएगा दिस आर्ट वर्क एट द एंशियंट पीरियड मेक्स अस प्राउड ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज. With different people were come to India in the ancient times, so this Nigritriate, the Australoids and the Alpine, the Dendric and the Armenoid and the Mongoloid, the Nordic आर्यंस केम टू इंडिया, वो सब इंडिया में आए थे और राइट यहाँ पे रहे थे. पार्ट ऑफ द अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे आए थे. द द्रविडियंस वी आर द डायरेक्ट द डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन्स एज सिविलाइजेशन एंड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्ट्रेलॉइड पीपल्स. तो ऑस्ट्रेलॉइड पीपल्स केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से आए थे. द आर्यन वू वेयर केम लेटर
called these people as Nisad, the Kol, the Munda, the Kasi tribal in Assam as well as the tribal in the Nicobar and Myanmar are the descendants of the asteroids races मतलब कलर्स. देयर फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो डार्क कॉम्प्लेक्सन था, ब्रॉड हेड था, फ्लैट नोज एंड द शॉर्ट स्टेचर स्ट्रक्चर. Next, how can we say that Aryans were natural lovers? The Aryan worshipped the trees, rivers, mountains, sun, wind, rain, etc. They composed the hymn of the elements of nature. Over time, the religious activities like the yajnas started in India. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडियाज नेचर हेरिटेज एंड द कल्चर हेरिटेज. तो उसकी बात करेंगे नेचुरल का हेरिटेज एंड कल्चर हेरिटेज. तो नेचुरल हेरिटेज इज अरेंज्ड बाय द नेचर टू कैटर टू आवर नीड्स. इंडियन कल्चर की बात करेंगे. कल्चर हेरिटेज इज मैन मेड होता है. नेचर हेरिटेज तो इट इज़ अ फ्री गिफ्ट बाय द नेचर. तो कल्चर में आएगा इट इज क्रिएटेड बाय एंसेस्टर्स. थर्ड पॉइंट, इंडियाज नेचर हेरिटेज यूनिक एंड वेरिड है, जबकि इंडिया का कल्चर्स हेरिटेज इज इमेंस एंड मेक अस फील प्योर. नेक्स्ट, इट हैज़ द कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप द कल्चरल हेरिटेज. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, इट सिग्निफिकेंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशियंट टू द प्रेजेंट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Explain the fundamental duties is laid down in the constitution for the preserve and conservation of our heritage. तो आर्टिकल 51A में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर सिटीजन्स एंड them 6, 7, 9 and the article 51 prescribe the duties of related to the preservation our cultural heritage. To value and preserve the rich heritage of our composite cultures. Next, to protect and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers, wildlife and have the compensation for the living creatures. And last, to safeguard public property and adjure the violence. Clear? सो दैट्स यहाँ पे अपना चैप्टर 1 फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.